Yes, students, now today I will explain you in chapter 1 geography the earth in the solar system, asteroids. Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. These are the tiny bodies होते हैं जो किसके चारों तरफ घूमते हैं, सन के. These are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. ये कहाँ मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में. Scientists are of the view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back. Now, meteoroids. This is the asteroid. You can see this picture. Asteroid. This meteoroids now, the small pieces of rocks which move around the sun. This is the small pieces of rocks जो कहाँ पर घूमते हैं, move around the sun, are called meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. कई बार ये हमारे अर्थ के पास आ जाते हैं और ये वहाँ और गिर जाते हैं. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Now, it a cluster of millions of stars होते हैं. This band is the Milky Way galaxy. वो बैंड क्या कहलाता है, Milky Way galaxy कहलाता है. And our solar system is also the part of this galaxy. Solar system is a part of this Milky Way galaxy. जो हमारा solar system है वो भी Milky Way galaxy का part है. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. It was named Akash Ganga. क्या नाम था उसका, आकाश गंगा. Now what is galaxy? Galaxy is a huge system of billions of stars. Billions of stars हैं galaxy में, and clouds of dust and gases. This is called galaxy. There are millions of such galaxies that make the universe. Galaxy क्या होती है, खूब सारे उसमें stars हैं, billions of stars हैं, क्लाउड्स हैं, किसका, डस्ट का और गैसेस का. इन सब को मिलाकर के गैलेक्सी बनती है. और यूनिवर्स कैसे बनता है, इन मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को मिलाकर के यूनिवर्स बनता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़. अब हम बहुत ही डिफ़िकल्ट है जो हम इमेज करें कि हमारा यूनिवर्स जो है वो कितना बड़ा है. नाउ we know that all of us, you and I, belong to this universe. हम सब जो हैं इस यूनिवर्स में से बिलोंग करते हैं. थैंक यू. I hope you will understand this.